Welcome to Ticker TV. India remains third largest economy in purchasing power parity is our news today. India has retained its position as the third largest economy after China and US in terms of purchasing power parity, said the government on 23rd June 2020, quoting the World Bank data. वर्ल्ड बैंक ने जो न्यू पीपीपी रिलीज की है ट्यूसडे को अंडर इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम आईसीपी, ये आईसीपी एनालाइज करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग अक्रॉस कंट्रीज इन वर्ल्ड। नेक्स्ट आईसीपी रेफरेंस विल बी इन 2021। अब थोड़ा ज्ञान की बात, ये पीपीपी क्या होता है एंड इसकी क्या जरूरत है, ये किसके और क्या काम आता है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमी, फर्स्ट थिंग कम्स इनटू आवर माइंड जीडीपी, राइट। किस कंट्री का कितना जीडीपी है, हु इज स्ट्रॉन्गेस्ट, हमारे कंट्री की क्या रैंकिंग है, हाउ इज यूएस इकोनॉमी डूइंग वेल, इज चाइना बिगर देन यूएस इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, एंड हाउ वी कैन कंपेयर यूएस की जीडीपी जो कि डॉलर में मेजर होती है जबकि चाइना का युआन में होती है और हमारा इंडिया का रुपीज में होती है। सो इफ वी न्यूट्रलाइज करेंसी देन वी मे गेट सम पैरिटी, राइट। जीडीपी मेजर करने के लिए देयर आर टू वेज। International financial institutions like IMF publishes real GDP in its World Economic Outlook. So एक तो मेजर करने का तरीका होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो भी मार्केट रेट होती है। दूसरी अप्रोच होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। Purchasing power parity is an economic theory that allows the comparison of purchasing power of various world currencies to one another. It's an exchange rate that allows you to buy the same amount of goods and services in every country. The World Bank computes PPP for each country in the world. Now, India का market share है 6.7% in terms of PPP at global front, while China का 16.4% and 16.3% है USA का. Let's understand with one example. Let's say you buy popcorn for ₹40 in a very small town. Same quality and quantity you may get for ₹200 in multiplex in metro. सो इन टाउन वो जो शॉप पे पॉपकॉर्न बिक रहा है उसके एक्सपेंसेस लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एटसेट्रा, और जो मल्टीप्लेक्स पे एक्सपेंसेस है वो दोनों डिफरेंट हैं। सिमिलरली सपोज इन यूएस ये जो पॉपकॉर्न है वो $10 का है, सो इन इंडिया इट शुड बी 700 रुपीज अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट। लेट से $1 के बराबर है 70 रुपया, बट इन इंडिया लेट से वो 200 रुपए का पॉपकॉर्न मिल रहा है। तो पीपीपी क्या होगी? पीपीपी का फॉर्मूला है P1 अपॉन P2, where P1 is our country price which is 200 rupees, P2 other country's price which is $10. So 200 divided by 10 क्या आया? 20 rupees per dollar. So we can see huge difference when we compare in actual FX terms and PPP terms because PPP includes cost of living factor. Let's see how it came into existence. PPP was created after World War I. Before then, most countries relied on gold standard. After war, they printed all the money they needed, creating inflation actually. So the Swedish economist Gustav Kessel ने suggest किया कि we should multiply each currency's pre-war value by its inflation rate to get the new parity. That formed the basis of today's PPP. To facilitate price comparison across countries, the International Comparison Program was established by United Nations and the University of Pennsylvania in 1968. The best way to understand PPP is to study the Big Mac Index. Since McD burger is sold at globally product and maintains same standards. Suppose आप McD का बर्गर चाइना में लेते हैं, वो उधर सस्ता मिलेगा, इसलिए नहीं कि उधर यूएस के बर्गर से छोटा मिलेगा, बट इसलिए मिलेगा बिकॉज वहाँ की लेबर सस्ती होगी, वहां का रियल एस्टेट सस्ता होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती होगी। दैट्स कॉल्ड बर्गोनॉमिक्स। द बिग मैक इंडेक्स विल टेल यू अ लॉट अबाउट ए कंट्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। इफ यू वांट टू लिव चीप एंड यू कैन मूव टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, यू मे यूज द बिग मैक इंडेक्स। सो टुडेज क्वेश्चन, पीपीपी वर्सेस मार्केट रेट, सो विच वन इज बेटर? थैंक यू फॉर टाइम, कीप वॉचिंग टिकर टीवी।